10 दिन 10 यूनिट्स। तो हर दिन हम आपको हर यूनिट की 10 इंपॉर्टेंट बातें, मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, हाउ यू विल रिमेंबर इन दैट एंटायर यूनिट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। जैसे यूनिट नंबर 1, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विद यूनिट नंबर 1 एंड सो ऑन। ठीक है, सो एवरीवन गियर अप। 10 दिन में बेसिक्स, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आपको पढ़ना है सो दैट यू कैन डू योर बेस्ट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन दिस रीनीट। स्टे पॉजिटिव, स्टे विद योर टारगेट। अपना सोचो और अपने लिए जो अपने प्रिपरेशंस की हैं अभी तक, उस पर आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। ऑल द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी मैं आपको हाइलाइट्स दे रही हूँ, आपको सिर्फ उसको अच्छे से सुनना है, उसको मेमोराइज करके रखना है, so you can hear my videos again and again. All right, so here we go with the unit number 1 today, because we have now 10 days, the countdown starts, and every day one unit will be done by us. So first of all, unit number 1, वहां से हम लोग शुरू करते हैं, और ये मेरा स्क्रीन शेयर स्टार्ट होता है। Got it. So unit number 1, we have first of all the living world. So what is there to be important? इसमें सबसे important जो बात आपको याद रखनी है, that is we are going to start with the biodiversity. 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है बायोडाइवर्सिटी में। आपको ध्यान रखना है ICBN और ICZN का क्या है फुल फॉर्म। इट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature. All right? Okay. All right. After this, binomial nomenclature में आपको क्या ध्यान रखना है? It was given by Carl Linnaeus. इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, और सबसे बेस्ट कॉमन एग्जांपल एनसीईआरटी का है मैग्निफेरा इंडिका लिनियस। सिर्फ मैग्निफेरा इंडिका में यूज हुआ है अपर केस एब्रिवेटेड ऑथर्स नेम। सो दिस इज जेनरिक एंड लोअर केस इटैलिक्स एंड नॉन इटैलिक्स। हैंड रिटन में अंडरलाइन सेपरेटली। Classification is not a single step process. It is based on some easily observable characters. Remember, easily observable. Taxas could be of different levels. It could be a plant, it could be a wheat, dog, mammals, animals. Taxonomy में classification of living organisms into taxa होता है. Processes क्या क्या है? इसमें है characterization, identification, classification, nomenclature. Basis of modern taxonomy में है structure, internal as well as external, cell structure, ecological informations, and developmental processes. Next, systematics. Systematics is taxonomy plus evolutionary relationship. दोनों को systematics में combine करते हैं. Systema Naturae is a book written by Linnaeus. Then we come to taxonomic categories. So classification, it is a hierarchy of steps. Taxonomic hierarchy, it represents categories. Taxonomic category are distinct biological entities. They are not mere morphological entities. So commonly called as taxon. So taxonomic category is unit of classification, that is taxon or a rank. Category represents or denotes a rank. Category represented by groups also. Then we will talk about finally this one. ये पूरा आपको ascending order में 7 broad categories ध्यान रखना है. That is kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species. Species, maximum number of common characters. Then remember these common names: biological name, genus, family, order, class, phylum, division. So this is about the man, Homo sapiens, Homo hominidae, primata, mammalia, chordata, housefly, Musca domestica, Musca, Muscidae, Diptera, Insecta, Arthropoda, mango, Magnifera indica, it is Magnifera, Anarchidaceae, Sapindales, Dictyole, dicotyledons, and angiospermae. Wheat, Triticum, Estivum, Triticum, Poaceae, Poels, Monocotyledons, Angiosperms. Remember this entire page, इसको आप अच्छे से learn कर लीजिए. Phylum, division, class, order, family, genus, species. जिसमें animal kingdom भी है और plant के बारे में भी है. Especially those which are also given in the paragraphs.
ठीक है, लाइक पॉलीमोनियल्स की कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी, सोलेनम, धतूरा, पिटूनिया। सोलेनम में है मेलांजना, नाइग्रम, ट्यूबरोसम। Similarly, animals में carnivorous, Felidae, Canidae में Felis, Panthera, Panthera tigris, Pardus, and Leo. So this is basis of identification based on the resemblances and distinct differences. Each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising of two words. So all the categories constitute taxonomic hierarchy. Next, after this, we go to the another one, and that is none other than biological classification. So, in the biological classification, we talk about in the biological classification, we start from these ones. Biological classification may first scientific attempt, but for the plants and the animals, that is by Aristotle. And the plants, it is plants may herbs, shrubs, and trees on the basis of simple morphological characters. Animals may it is on the basis of the RBC and red blood, you have non-red blood. The red blood, which has RBC, is present in enema, and the other one are anema. Next, we talk about two kingdoms में two kingdoms classification. It is of gross morphology plus cell wall. Later जो criteria add हो गए वो है cell structure, habitat, nature of cell wall, reproduction, mode of nutrition, evolutionary relationships. Then we talk about the five kingdom by R.H. Whitaker. तो याद रखना है आपको R.H. Whitaker ने इनिशियली इससे पहले प्लांटर एनिमेलिया में कुछ स्पीशीज अलग जो उसमें रहते थे वो फिर कंबाइन हो गए इनिशियली इट वाज प्लांटे में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला और एनिमल किंगडम में पैरामीशियम और अमीबा होते थे प्रोटेस्टा इट इज क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला पैरामीशियम एंड अमीबा राइट सो लाइक दिस नाउ हियर यू कैन सी दिस एंटायर टेबल यहाँ पे जो मेन बातें हमें ध्यान रखनी है वो है मोनेरा की पेप्टाइडोग्लाइकन cell wall is peptidoglycan polysaccharides plus amino acids है protestum it is present in some fungi में present with chitin it is with chitin plantae में it is cellulose and animal में it is absent body organization में fungi में it is loose tissues multicellular plantae में it is tissue और organ animals में tissue organ system so mode of nutrition की अगर हम बात करते हैं it is autotrophic that is chemosynthetic and photosynthetic heterotrophs में it is most abundant saprophytes या parasites इसमें holozoic exclusive है protista is autotrophs तो उसमें दोनों है autotrophs and heterotrophs fungi exclusively heterotroph with saprophytes or parasites plantae are exclusively photosynthetic that's our insectivores. Remember, under the plants, all they have cell walls. उनको कौन कौन किसको ऐड कर दिया था plants के अंदर बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae फंजाई को भी राइट इनको ऐड किया था और what are the differences placed together widely different groups brought together wrong जो classification थी उसमें कौन कौन से groups wrongly brought together unicellular multicellular एक साथ आ गए like Chlamydomonas and Spirogyra प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स एक साथ थे लाइक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज एंड बीजीए यूकैरियोट्स में अदर ग्रुप्स ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स कंबाइंड हो गए लाइक ग्रीन प्लांट्स एंड फंजाई एंड काइटिनियस सेल वॉल और सेलुलोजिक सेल वॉल के ऑर्गेनिजम्स एक साथ आ गए लाइक फंजाई एंड प्लांट्स देन वी टॉक अबाउट थ्री डोमेन्स में आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरियाज में यू बैक्टीरियाज यूकैरियाज में प्रोटेस्टा फंजाई प्लांटे और एनिमेलियाज आते हैं कार्ल वूज ने इसको किस बेसिस पे दिया था basis was difference in ribosomal RNA and other molecules. किंगडम मोनेरा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी रखता है ओनली बैक्टीरिया होते हैं सोल मेंबर्स बैक्टीरिया के अंदर आप ये सारे शेप्स देख सकते हैं स्कोका स्फेरिकल होता है बेसिलाई रॉड शेप स्पोर्स है ये लेबलिंग में फ्लैजुलम ये स्पाइरल है और ये कॉमा शेप विब्रियो they are cosmopolitan found everywhere they are either ectoparasites or endoparasites archaebacteria में halophils thermoacidophils methanogens halophils में salty areas में रहने वाले thermoacidophils hot springs methanogens marshy areas के ruminant in the gut also then photoautotrophs के अंदर होते हैं autotrophic में दो categories हैं photoautotrophs and chemoautotrophs
Energy derived from sunlight, and this is cyanobacteria, blue-green algae, which has chlorophyll A. And chemoautotrophs, their energy derived from inorganic substrates, and their nitrate, nitrite, or ammonia. They are stored as ATP, and their nutrients recycling में उनका सबसे बड़ा योगदान है. That is spin, SPIN याद सकते हो. Spin the cycle, recycle, cycle spin करता है. SPIN, sulfur, phosphorus, iron, and nitrogen. ऑटोट्रॉफ्स कुछ ही होते हैं, सब मोस्ट मेजोरिटी जो होती है बैक्टीरियाज में वो हेटरोट्रॉफ्स है. दे आर पैरासाइट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑन या इन एक्टो या एंडोपैरासाइट्स. मेजोरिटी सेप्रोट्रॉफ्स डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, राइट. यू बैक्टीरियाज ऑल्सो ट्रू बैक्टीरियाज, वो मोटिलिटी रखते हैं तो फ्लैजिलम होता है. ये एग्जाम्पल है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे नॉस्टॉक का. स्पेशल सेल्स है इसमें फॉर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेट्रोसिस्ट, और इसमें म्यूसिलेजिनियस शीट है. बैक्टीरिया मेजोरिटी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, उसमें भी मेजोरिटी डिकम्पोजर्स होते हैं. Remember these groups, some are pathogens causing damage to human beings, crops, farm animals and pets. Chlorella, Vibrio cholera. Cholera cause करता है typhoid, Salmonella typhi, tetanus, Clostridium tetani. Citrus canker, Xanthomonas citri are well-known disease caused by different bacteria. Next, we talk about mycoplasma. They lack cell wall. There is no cell wall. Smallest living organisms. Majority are pathogenic to both animals and plants. Anaerobic होते हैं, can survive without oxygen. Reproduction in bacteria is by fission only. This is the DNA and the labeling. This is cell membrane and cell wall by fission. And not only this, they have no syngamy, no recombination, but just a DNA transfer through pili. Next is Kingdom Protesta. Kingdom Protesta unicellular eukaryotes. They are chrysophytes, diatoms और desmids इसमें होते हैं. Desmids को golden algae कहते हैं. Chief producers of oceans होते हैं. इसका habitat है marine plus fresh water. They are planktons, passive flow, photosynthetic mostly. इंपॉर्टेंट सेल वॉल्स, इनकी दो तरह की ओवरलैपिंग होती है सिलिका डिपोजिशन की वजह से. दे हैव टू ओवरलैपिंग सेल वॉल्स, लुक्स लाइक अ सोप बॉक्स स्ट्रक्चर. सिलिका डिपोजिशन मेक्स अ सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टेबल. इसकी एक्यूमुलेशन को डायटोमेशियस अर्थ भी कहा जाता है. अगर हम इसकी बात करें डायनोफ्लैजिलेट्स की, तो डायनोफ्लैजिलेट्स में हैबिटेट मोस्टली मरीन है. न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेटिक. कलर इसका रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ब्राउन है. एंड यू कैन ऑल्सो सी इसके दो तरह के फ्लैजुला हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुला. मोस्टली इसके दो होते हैं. स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होती है और रेड टाइड्स कॉज करते हैं. दे रैपिड मल्टीप्लाई एंड रिलीज टॉक्सिन्स एंड आर हार्मफुल टू द मरीन एनिमल्स लाइक फिशेस. एंड द एग्जांपल इज गोनलॉक्स. Euglenoids, their habitat fresh, stagnant, majorly the water. एंड लॉन्ग फ्लैजुला, शॉर्ट फ्लैजुला भी होता है. यूग्लिना में इंस्टेड नो सेल वॉल, दे हैव अ पेलिकल which is made up of protein and they give flexibility. Nutrition, अगर photosynthetic है मतलब लाइट है तो photosynthesis. No sun, they become heterotrophs, predators. एंड इसके बाद हम स्लाइम मोल्ड्स में आते हैं. दे आर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में फीड करते हैं. प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन को कहते हैं. सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बन रहा है. सेवरल फीट इसकी हाइट हो जाती है और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बनता है. स्पोर की ट्रू वॉल होती है. फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं जिसकी ट्रू वॉल है एंड इट इज डिस्पर्स्ड बाय एयर एंड इट इज हाईली रेजिस्टेंट. कैन सर्वाइव फॉर सेवरल years. Protozoans, primitive relatives of animals. And there are four categories: amoeboid, ciliated, flagellated, and sporozoans. All are heterotrophs, predators और parasites दोनों हो सकते हैं. इसमें सूडोपोडिया है, सिलिका शेल्स होते हैं मरीन फॉर्म्स के अंदर. इसमें पैरामीशियम है. thousands of cilia is there. Coordinated movement है. Cavity called as gullet opens outside the cell. Food stirred into gullet. इसके बाद हम देखते हैं स्पोरोजोन्स के अंदर अगर हम देखें, सो देयर इज स्पोर लाइक स्टेज इन्फेक्शियस. मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉज करता है. किंगडम फंजाई की अगर हम बात करते हैं, सो देयर आर सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स एंड सिम्बायोटिक. सैप्रोफाइट्स डेड ऑर्गेनिक मैटर, पैरासाइट्स लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है. सिम्बायोटिक्स माइकोराइजा और लाइचेंस इसका बेस्ट एग्जांपल है. इसमें हम देख सकते हैं कि ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर सिनोसाइटिक हो सकते हैं या सेप्टेट भी हो सकते हैं. नेटवर्क हाइफे, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. उसका
or mycelium is network of hyphae. This is the fruiting body. The unicellular, except the yeast is only unicellular, rest or filamentous. Significance में antibiotics में penicillium, edible में है common mushrooms, morels, truffles, toadstools, genetic work, neurospora. Diseases की देखें तो rust causing Puccinia, smut causing Astillego, white spots on mustard leaves, albugo, and bread molds में Rhizopus. Reproduction, vegetative, asexual, and sexual. Vegetative fragmentation, budding, and fission से है. Asexual is by spores, conidiospores, sporangiospores, zoospores. Sexual में oospores, ascospores, basidiospores, produced in fruiting bodies in sexual spores. They have this stage, the three stages. Basis of classification is morphology of mycelium, mode of spore formation, fruiting bodies. So meiosis में sexual reproduction में ये haploid होंगे. They combine plasmogamy जिससे n plus n बनता है. That is dikaryophase only in ascomycetes and basidiomycetes. 2n is zygote. Next is phycomycetes के अंदर हम particularly देखने जा रहे हैं. इन चारों के अंदर हमें जो भी देखना है, now we are going to see it inside the form of a table. जो उसकी टेबल्स हैं उसमें हम इसको डन करेंगे, लेकिन मैं आपको फिलहाल यहाँ पे बुक से रिलेटेड कंटेंट बता देती हूँ. यस, फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो दे आर एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक हाइफे, aquatic habitats, obligate parasites on plants, and asexual is by zoospores, by motile. Asexual take place by zoospores or by aplanospores, which is non-motile, and spores are endogenously produced in sporangium. Zygospore is produced by fusion of two gametes, and that is how it is. So example is RAM. You can remember RAM, CAN, Pagem, and UPI both act same. So here, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर एस्कोमाइसिटीज की, तो या ब्रांच एंड सेप्टेट हाइफा. ठीक है, इसमें वो देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका. कोनिडियोफोर स्पेशल माइसीलियम है. कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर्स और जर्मिनेट्स टू फॉर्म न्यू माइसीलियम. और अगर हम इसके एग्जाम्पल से बाकी सेक्सुअल स्पोर्स को भी देख सकते हैं. एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली in sac like asci. Singular is ascus. And they're arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. And Basidiomycetes को club fungi कहते हैं. Mushrooms, bracket fungi, puffballs. और ये parasites भी होते हैं rust and smuts में. Branched or septate asexual spores are generally not found. Reproduction by fragmentation. Sex organs absent. Plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. And karyogamy meiosis takes place in the basidium, producing four basidiospores. So they are exogenously produced on the basidium. So basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarps. Example, agaricus, Astalago, and Puccinia, rust fungus, wheat rust, smut of Astalago. So asexual spores not found, vegetative reproduction by fragmentation, sex organs are absent. Deuteromycetes के बारे में है, they are also known as imperfect fungi because उनमें reproduction is only vegetative and asexual spores known as conidia. Mycelium is branched or septate. Nutrition is saprophytes, parasites. Large numbers are decomposers. They're imperfect fungi. And we can see here, agar once linkage is established and sexual stages are known, fungi is removed from the Deuteromycetes and often moved to Basidio ya Ascomycetes. Next is kingdom plantae and animalia. Not a big deal. You will able to understand it with the coming class on it. इसका जो चैप्टर आएगा उसी में हम कवर अप कर लेते हैं. वायरसेस में नॉन सेलुलर obligate parasites हैं. Many have either DNA or RNA, never both. They have inert crystalline structure. Usually plants में single stranded RNA होता है. Animals में single stranded RNA, single stranded DNA या double stranded DNA होता है. Bacteriophage usually genetic material is infectious. Virus is a nucleoprotein. Ivanovsky recognized TMV, Vegenic
gave the name virus to pathogens contagium vivum fluidum. Stanley virus can be crystallized, which largely consist proteins. Diseases in humans may mumps, small mosaic formation. Oh, sorry. Diseases in humans, if we go downward, mumps, smallpox, herpes, influenza, AIDS by HIV. Symptoms in plants may have mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing, vein clearing, and droughing. यहाँ पे हम देख सकते हैं this is TMV smaller than bacteriophage can pass through bacterial filters. RNA is single stranded RNA. Capsid is protects the nucleic acids, and there are many capsomeres which forms a capsid to protect the nucleic acid. Capsomeres are small subunits, helical or polyhedral. Then यहाँ पर double stranded DNA usually, when this is the head, this is collar, this is a sheath, this is tail fibers, this is bacteriophage infects bacteria. Viroids or prions में viroids discovered by TO diners smaller than viruses and molecular weight is less than virus. Free RNA है, lacks protein coat, causes potato spindle tuber disease. Prions similar to virus in size has abnormally folded proteins and they causes BSE, also known as mad cow disease. BSE full form, it is in cattle, it is known as bovine spongiform encephalopathy. Okay, and it is analogous variant of CR Jacob in humans. अच्छा, दो symbionts हैं lichens, phycobind और mycobind, इसके दो components हैं. Algal component is phycobind, autotroph or prepare foods. Mycobind is fungal component, heterotrophic, provide shelter, mineral nutrients, and water. Lichens are pollution indicators. They do not grow in polluted areas, right? So this is the summary. You can have a look. Bacteria, cosmopolitan distribution. Protists have defined nucleus of the membrane-bound organelles. And some acellular organisms like viruses and viroids as well as lichens are not included in the five kingdom system of classification. After this, we will move to the next ones and that we can see here. प्लांट किंगडम, अगर हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो प्लांट किंगडम की समरी से लेट्स स्टार्ट विद दैट स्टार्टिंग से ही. राइट, प्लांट किंगडम में प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से प्लांट किंगडम इज एल्गे में क्लोरोफाइसे, थियोफाइसे, रोडोफाइसे, ब्रायोफाइट्स में मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, टेरिडोफाइट्स में सिलोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा. तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, एक फाइबर है, फाइबर को पहले स्पिन करो, सिलो और उसको ट्राई करो, लाइक करो. एंड प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स हैं और जिम्नोस्पर्म्स भी हैं. टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन superficial morphological characters either vegetative or endoecium by Linnaeus. ठीक है, and vegetative is easily affected by environment and this is how it is. Weightage example endoecium का दिया था. Natural system of classification, it is by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. And इन्होंने based on natural affinities among the organisms criteria use किया था. ठीक है, and external features, but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, and phytochemistry. So same taxa, common ancestors. Phylogenetic system of classification, it is based on evolutionary relationships between various organisms, and it assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestors. Branches of taxonomy, so it is numerical. Numerical is based on computer is based on all observable characteristics. Numbers and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. Each character is given equal importance. At the same time, hundreds of characters can be considered. Cytotaxonomy is based on cytological information like chromosome number, structure, behavior. Chemotaxonomy, chemical constituents of the plants. Algae, autotrophs हैं, chlorophyll bearing, simple and thyroid, largely aquatic, which is freshwater or marine. So fungi में lichens and animals on sloth bear. So you can see colonial is volvox, filamentous is Gelotrix and Spirogyra. Marine में है kelps, that is massive plant bodies, height up to 100 meters. The form and the size of algae is highly variable.
ranging from colonial forms like volvox and filamentous forms like Velociraptor and Spirogyra. Reproduction in algae is vegetative, asexual, and sexual. Vegetative reproduction may it is each fragment develops into thallus, and asexual reproduction is by zoospores. They are flagellated, motile. And sexual reproduction, isogamous, isogamous may Eulothrix, flagella, Spirogyra, and anisogamous में Eudorna differs in size. Oogamous में male is small, motile, volvox, and female is large and static. So like volvox and fucus. Ecological importance की अगर हम बात करते हैं, plant kingdom में wait. In this case of plant kingdom, okay. So here, yeah. In the plant kingdom, अगर हम देखें, let's check this part. All right. तो यहाँ पर इकोलॉजिकल एंड कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे स्पेस फूड क्लोरेला हेल्प होता है 50% द टोटल CO2 फिक्सेशन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ aquatic food cycles mostly 70 marine species almost are for eatable like Porphyra laminaria sargassum hydrocolloids में है algin and carrageen it is carrageen algin is brown algae and it is red algae अगर इज बाय जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरियस आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में क्लोरोफाइसी के एग्जांपल्स में अगर हम देखते हैं यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस में क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास कॉलोनियल में वॉलवॉक्स फिलामेंटस इज जिलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा chlorophyll A and B is present in grass green chloroplasts they have various shapes and they have pyrenoids stores proteins and starch oil droplets in some stores fats cell wall is outer is pectose and inner one is cellulose vegetative asexual and sexual में vegetative is fragmentation and spores से asexual is zoospores and zoosporangia sexual में isogamous anisogamous and oogamous Eulothrix is filamentous daughter colonies is there parent colonies are these dot dots volvox colonial क्लास Phaeophyceae Phaeophyceae के अंदर दिस इज ectocarpus जो filamentous है it forms branched simple या profuse like kelps reach up to 100 meters mainly marine and the pigment is chlorophyll A and C xanthophylls and carotenoids food stored is laminarian or mannitol plant bodies attached to substratum cell wall is cellulose with gel covering of algin. So like this, then laminaria. This is laminaria, leaf-like photosynthetic organ. Fronds, type and hold fast कहते हैं. This is fucus. This is dictyota. And then uh, rhodophyceae के अंदर porphyra. This is frond. Then this is polysiphonia, main axis branched. This is the pigment. R phycoerythrin habitat majorly marine warm में ज्यादा रहते हैं as compared to cold surface और depth पे दोनों पाए जाते हैं and food storage Floridian starch amylopectin and glycogen. Then we can see here thallus multicellular है complex body reproduced by vegetation vegetative reproduction is by fragmentation asexual is non-motile spores sexual is non-motile spores, oogamy. Remember, non-motile. Now, after this, bryophyta, mostly habitat moist and shady, damp and humid locality. And they have, gametophytic stage is dominant over sporophytic stage. So, in this, root-like, stem-like, leaf-like structures and plant body is prostrate and erect, thallus-like, haploid gametophyte. Rhizoids can be unicellular or multicellular. Ecological importance है इनको amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. They usually occur in damp, humid, and shaded localities. They play important role in plant succession on bare rocks or soils. Now it is more differentiated than that of algae.
right? And then rest is we can think about the two categories of haploid and diploid sporophytes. And the haploid gametophyte is dominant, photosynthetic, independent, can be thyroid or erect, like Markensia. Diploid sporophyte, not free living, attached to gametophyte, comprise of foot setae capsule. Capsule produces spores, partially totally on gametophyte for anchorage or nutrition. Liverworts के examples में ये आपको ध्यान रखना है, this is going to be the female and this is archegoniophore. This is gemma-cusp detached to form new individuals, and these are the rhizoids. Markensia, this is the female thallus, this is the male thallus. Antheridiopore, gemma-cups, rhizoids. They are gemma-cups, they are green multicellular asexual buds. They have small receptacles like this. And then we can talk about the mosses. Mosses may, this is the example, capsule, they have spores, they undergo meiosis. Setae, leaves, main axis, rhizoids, multicellular and branched. This is gametophyte, dominant, sporophyte, more elaborate than liverworts. Cinerea, a gametophyte and sporophyte of cinerea. This is the sphagnum gametophyte, archegonial branch. These are branches, antheridial branches, sex organs at apex of leaf. Then importance of bryophytes may they have little economic importance as a packing material for transshipment of living material because the capacity to hold water, and the mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks and hence are of great ecological importance. They decompose rocks making the substrate suitable for the growth of higher plants. Since mosses forms dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. Then pteridophytes, ferns and horsetails, first set vascular plants. So medicinal purpose है, soil binders है, they are frequently grown as ornamentals. Evolutionarily, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues, xylem and phloem. But they are found in cool, damp, shady places, and some may flourish well in shady soil conditions. Then here we have this is equisetum, this is Selaginella, and this is Salvinia. So that is there. They have two types of leaves. Small is microphyls and large, like as in Selaginella, or large macrophyls as in ferns. Then they also have in this S dominating over G means sporophyte dominating over gametophyte. Then next we talk about the another series of it, that is gymnosperms. So gymnosperms may we have Cycas, Pinus, and this is also a fossil, the fossil Jingo. And this is drop shoot, long shoot, seeds, and the stems are unbranched in cycas, branch in pinus or citrus. They also have this special roots, fungal association with form of mycorrhiza with pinus and some other cycas, small specialized roots called corylloid roots associated with nitrogen fixing cyanobacteria. And one of the gymnosperms, a giant redwood tree, sequoia, is one of the tallest tree species. So the cycas, the pinnate leaves persist for a few years. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity, and wind. And conifers and needle-like leaves reduce the surface area. Their thick cuticle and sunken from it also helps to reduce the water loss. And then we talk about their angiosperms. They are flowering plants, wide range of habitats, exceptionally large groups. Monocots or dicots may seeds only cotyledons, parallel venation, trimerous, and three members in each whorl, and here it is tetra pentamerous. Got it? Rest is the same, which you study in sexual reproduction flowering plants, where we have triple fusion, double fertilization event, and that is all. इसमें शॉर्ट में आप रख सकते हो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है मोस्टली फंगस में many algae, and such as volvox, spirogad, and some species of Chlamydomonas represent this pattern. They are very important. Next is diplontic life cycles में there is bryophytes and pteridophytes are the examples. इसमें bryophytes में G dominant S, pteridophytes में S dominant G. And Ectocarpus polysiphona, kelps are haplodiplontic, fucus and alga is a diplontic.
So that is all about it. Next, we talk about the animal kingdom. And in the animal kingdom, we will see एनिमल किंगडम में बेसिक्स हम लोग कुछ तो पढ़ ही लेंगे डेफिनेटली। एनिमल किंगडम के अंदर हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो सारे लेवल्स हमें पता है कि यहाँ पर हम देखने वाले हैं। This is level of organization starts from cellular levels, tissue, organ system. Porifera, some division of labor exists. Tissue में Coelenterata, Ctenophora. Organ level is Platyhelminthes. Organ system level is Aschelminthes, Annida, Arthropoda, mollusks, echinoderms, and chordata. And then we see here digestive system. It is incomplete, mouth present, anus absent. It is in Nidaria, coelentrates, and platyhelminths. Complete, two openings, Aschelminthes, chordates, one mouth, one anus. Complete है, absent in Porifera. Circulatory system, open and closed type is there. Absent is in Porifera to Aschelminthes, no circulatory system. Open system is there, directly bathing, that is Arthropoda, mollusca, and hemichordata. Closed type is Annelida for the first time, and then chordates. Body symmetry, radial hair. Radial symmetry, any plane passing through center axis divides the body into two equal halves. Bilateral symmetry, it is left and right, identical halves in only one plane. डिप्लोब्लास्ट एंड ट्रिप्लोब्लास्ट ऑर्गेनाइजेशंस में डिप्लोब्लास्टिक में है सीलेंट्रेट्स एंड निडेरिया, ट्रिप्लोब्लास्ट में प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेट्स तक। ये आपको डायग्राम ध्यान रखना है। डिप्लोब्लास्टिक में ये मीजोग्लिया दिखाया जाएगा प्लेन, और डिप्लोब्लास्ट में कुछ ज्यादा ये फ्लोरल डेकोरेशन है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और ये है मीजोडर्म। सीलोम है, सीलोम के अंदर डायग्राम याद रखना है, सीलोमेट है, जिसमें यहाँ पे ये लाइन देखो ऐसे डिवीजन आ रही है, ये पूरा एक पाउच बन रहा है मीजोडर्म का लाइनिंग के साथ। लाइंड मीजोडर्म सीलोम बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, annelida to chordates. Pseudocoelom mesoderm as scattered pouches by between ecto and endoderm. This is pseudocoelomates, aschelminthes. Acoelomates में nidaria, ctenophora, platyhelminths. Segmentation metameric होगी, external internal division दोनों होगा, serial repetition of at least some organs. And then we come to notochord, non-chordates में है porifera till echinoderms. It is basically in this book, but it is hemichordata तक. Chordates में only chordates comes, right? And then we have those. We will have in the animal world another thing to talk about. वो मैं आपको बता देती हूँ, right? यस, अब यहाँ पर जब हम एनिमल किंगडम की समरी देखते हैं, आप लोग इसको ऐप से भी देख सकते हैं। फ्री मटेरियल फोल्डर है, उसमें आप जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। बायोएस का ऐप आपको मिल जाएगा इजिली इन द केस ऑफ यू कैन से मेरे ऐप में प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, एंड iOS में यू हैव टू गो विद क्लास प्लस एंड देन यू हैव टू टेक द ऑर्गेनाइजेशन कोड फ्रॉम अस। सो प्रेजेंट और एब्सेंट की कोड यहाँ पे यूज होगा। एंड लेट्स सी, इससे आपको बहुत सारे समरी चार्ट्स, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो you have to just do one thing. You have to simply let me know about it, and we will make it for you guys, right? So remember one thing that I am very particular कि अगर कुछ भी बच्चों को कभी भी कोई डाउट है, क्रिएटिविटी में कुछ, लर्निंग में कुछ भी इशू आ रहा है, so ensure that you have to just inform me, and definitely I am there to help you out. ठीक है? So that is the first thing. तो अभी हमने यूनिट 1 ऑलमोस्ट हम पूरा पढ़ने जा रहे हैं। अब हम एनिमल किंगडम की मैंने एक समरी बनाई है। इस तरह से मैंने बहुत सारे ब्रेन मैप्स बनाए हैं, जिसमें मैं खुद को एज अ स्टूडेंट अगर कंसिडर करूं, सो हाउ आई विल बी एबल टू रिएक्ट, मैं कैसे याद कर पाऊंगी इतनी सारी चीजें, कैसे रिटेन करूंगी सारे सब्जेक्ट्स के साथ। तो वो मैंने आपकी नजर से सोचकर इसको क्रिएट किया है। यू कैन आस्क फॉर मी, यू कैन टेक इट फ्रॉम आवर ऐप ऑल्सो, इट इज देयर इन द फ्री मटेरियल फोल्डर। सो अगर हमारे बायो से नॉन रजिस्टर्ड भी है बच्चा, तो भी वो उसको एक्सेस कर सकता है, और जो रजिस्टर्ड है उनको ये सारी चीजें ऑलरेडी हैंडी है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द एनिमल। सो हेयर स्टूडेंट्स, अच्छे से सारी चीजें जो मैं बताती जा रही हूँ उसको आप रिवाइज करते जाएंगे। एंड यस, सो पॉरीफेरा स्पॉन्जेस में special characteristics: water canal system, presence of oistia, spongocoel to osculum, nutrition, respiration, excretion सब यही करता है। कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल्स बने हुए हैं। इसके स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन भी हो सकता है, फाइबर्स भी हो सकते हैं। स्केलेटल सिस्टम, स्क्वाइनोसाइट इसका स्पेशल सेल है। एग्जाम्पल ऑफ पॉरीफेरा है साइकन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला।
Cycle is cipher, use sponge or bath sponge. Spongula is fresh water sponge. So cotton, sponge, square. Sponge, square. You can see corn, cotton, sponge, sponge, दो बार. तो ये इसका nickname ऐसे याद कर सकते हो. Nidaria, Nidoblast contains stinging capsules, nematocytes, forms sporals of calcium carbonate, shows metagenesis. Polyps and medusae form है इसमें, polymorphism है, single opening mouth और hypostome. एग्जाम्पल है इसके अंदर आप देखें सीलेंट्रेटा इंक्लूडिंग आउटलाइन ऑफ द बॉडी फ्रॉम ऑरेलिया इट इज मेड्यूसा एडेंसियस पॉलिप फाइसीलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर एडेंसिया सी एनिमोन पिनाक्टुला सी पेन गॉर्गोनिया सी फैन और मेड्रीना ब्रेन कोरल तो इसका एग्जांपल है पापा गुड मॉर्निंग सो PAPNGM so PPGM so you can see like this and this is diagram view of nidoblasts टीनोफोरा सी वॉलनट्स या कोम चेलीज बायोल्यूमिनेसेंस है 8 सिलियरी कोम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन टेंटिकल्स अगर होंगे तो दो होंगे कोलोब्लास्ट सेल्स होते हैं फॉर एडहेरेशन प्लूरोब्रैंकिया टीनो प्लाना यानी तीन प्लान बनाए इन्होंने 3 नंबर पे इसका है और 3 प्लान बनाए इन्होंने तीनों प्लाना प्लूरो और ब्रैंकिया दोनों लंग से रिलेटेड है so you can remember like that platyhelminths के केस में platforms bisexual they are also ventrally flattened body flame cells for excretion hermaphrodites हैं they're bisexual sexes in the same body can do self fertilization regeneration capacity highest example planaria presence of hooks and suckers ये tapeworm tinea tapeworm facula liver fluke fussy tent ऐसा कर सकते हो facula and tinea Astralmenthes roundworms, body cross section is round, muscular pharynx. Sexual dimorphism है, male is short with a curved tail and female with a long, length. So rennet cells for excretion and Ascaris roundworms, Wuchereria filarial worms and Cyclostoma hookworms. ठीक है? So आप याद रख सकते हैं which encyclopedia you want to read अक्सर. So अक्सर Ascaris. Next, Annelida, segmented worms, metameric segmentation, hermaphrodites, cross-fertilization, nephridia for excretion, longitudinal and circular muscles for locomotion, aquatic nereis with parapodia. So it is dioecious, nereis में और herodinaria is monoecious. Example, nereis, Ferritima, that is earthworm, and herodinaria is blood-sucking leech. Arthropoda, largest phylum, over two-thirds of the named species. Chitinous exoskeleton, body divided into head, thorax, and abdomen. Jointed appendages, sensory organs present. Malphizian tubules for excretion. Example, economically important insects, apis, honeybees, ठीक है एंड बॉम्बे का सिल्क फेमस है रिमेंबर ऐसे जस्ट लाइक दैट बॉम्बे सिल्क वर्म लैसिफर लार्क इंसेक्ट वेक्टर्स है एनोफिलीज क्यूलेक्स और एडीज मॉस्किटोज ग्रेगेरियस पेस्ट में लोकस्टा लो कॉस्ट हो जाती है अगर पेस्ट अटैक करता है क्रॉप्स में तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है लो कस्टा लो कस्ट लिविंग फॉसिल किंग अब फॉसिल बन चुके हैं तो लिविलस किंग किंग क्रैब so this is locust this is butterfly this is scorpion and this is prawn. Mollusca, second largest phylum, calcareous exoskeleton, radula, file-like rasping organs. Body divided into head, muscular foot, and visceral hump and mental cavity with feather-like gills, ctenidia. Sensory tentacles होते हैं at the head regions ऐसे. This is pila. This is octopus. Examples है pila में apple, snail, pile of the apple, pink tada, pink pearl, sepia, cuttlefish. कट हो जाता है कहीं कट लग जाता है सेप्टिक हो सकता है सेपिया कटलफिश ऐसे याद रख सकते हो लॉलिगो स्क्विड एंड ऑक्टोपस डेविल फिश एप्लाइसिया सी हेयर डेंटेलम डेंटल हाथी टस्क हाथी के दांत डेंटल डेंटेलियम टस्क शेल्स एंड चीटोप्लूरा चीटोन चीटिंग इज ऑन चीटोन चीटिंग इज ऑन चीटोप्लूरा इकाइनोडर्मेटा एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल रिमेंबर एंडो है ये भले ही स्पाइनी है क्योंकि वो एंडोडर्म से ओरिजिन होता है ऑसिकल्स सो वेंट्रल माउथ एंड डॉर्सल एनस वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट ट्यूब फीट है फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन लार्वा शोज बाइलेटरल सिमेट्री एंड एडल्ट शोज रेडियल ये यूनिक है एस्ट्रेस और ऑफ्यूरा सो एस्ट्रेस स्टार है एकाइनस सी अर्चिन सो कुमकुम आंटी ऑफिस की स्टार है यू कैन रिमेंबर लाइक दैट एकाइनस सी अर्चिन एंटीडॉन सी लिली क्यूकमेरिया सी कुकुम्बर एंड ऑफ्यूरा प्रिटल स्टार then comes the hemichordata worm like body proboscis for excretion collar and trunk as body parts
This is proboscis, this is collar, this is trunk, melanoglossus, melanoglossus and saccoglossus, balino seco. Chordate features में ये है nerve cord, notochord, gill slits, post anal tail, chordate characters है ये. इसमें Urochordata, tunicata, subphylum invertebrates में. Notochord only at the larval stage. It disappears in adults. Retrogressive metamorphosis. Ascidian larva is advanced. क्योंकि Ascidia adult is sessile and fixed with no tail. So मतलब no tail and no notochord. So Urochordata इसमें dosa या दोसा DOSA. Dolium, Salpa, Ascidia. Cephalochordata, subphylum invertebrates. Notochord persists in adults also from head to tail. एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा ब्रैकियोस्टोमा एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट. ठीक है, एम्फीथिएटर में लेंस लगे हैं. सब फाइलम वर्टिब्रेटा क्लास साइक्लोस्टोमेटा एग्नाथा जॉलेस डिवीजन जॉलेस ectoparasites on fishes migration to fresh water during spawning and die later. Body is devoid of scales and paired fins. Cranium and vertebral column are cartilaginous. पेट्रोमाइजोन लैम्प प्रे पेट्रोल से लैम्प जलता है. मिक्स एंड हैग mixing hagfish, a jawless vertebrate petromyzon, and division Gnathostomata, bear jaws, superclass Spices, two-chambered heart, poikilotherms, streamlined body, gill breathers, class Chondrocytes, and दूसरी class है Osteocytes. Chondrocytes, cartilaginous endoskeleton, ventral mouth, notochord persist, gill slits without operculum, tough skin with placoid scales, which forms backwardly pointed teeth, predaceous, air bladder absent. Pelvic fins of males, bears, claspers, internal fertilization, mostly viviparous. And you can see the examples, Scalodon, dogfish, okay, and then Pistis, priest, sawfish, Carcharodon, great white shark, trigon, stingray. Bony fishes में terminal mouth, operculum covers the gills, cycloid, ctenoid scales, air bladder present, fertilization external, mostly oviparous. Examples है marine exocetus flying fish, hippocampus seahorse, freshwater labio rohu, catla, clarius magar. Aquarium is betta fighting fish, pterophyllum angelfish. Class Amphibia, body divided into head and trunk, neck is absent, forelimbs with tetradactyl, hind limbs pentadactyl and webbed feet, moist skin, dual habitat, eyelids are there. Tympanum is present, cloaca is present, three-chambered heart. Example is Barish. Example Bufo, Toad, Rana is frog, Hyla is tree frog, Salamandra, salamander. Ichthyophis is limbless amphibians. And reptiles may have creeping, crawling mode of locomotion, epidermal scales and scutes present. Tymphanum is present. Tymphanum is the middle ear. Eardrum से start होता है. Ear pinna नहीं है. Cloaca has common aperture for excretion, egestion and gamete release. Poikilotherms है, that is full-blooded. Dry cornified skin, limbs if present, दो pairs. Shedding of scales and skin casts like snakes और lizards में देखा जाता है. कैलकेरियस एग है यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है शेल्ड एग एंड उसमें फर्टिलाइज्ड एग है ये. एमनियन है एक स्पेशल मेम्ब्रेन जिससे इसके एग्स एम्ब्रियो के ऊपर एक और एडिशनल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है विच प्रोटेक्ट्स इट. तो मतलब एम्ब्रियो फिर एक और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऐड हुई है. पार्टली फोर चेम्बर्ड हार्ट. एग्जाम्पल चिल ऑन चिल स्विमिंग कर रहा है चिल ऑन टर्टल स्विम करता है चिल करता है. टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस टेस्ट देगा टेरिस्टर में. Chameleon, tree lizard, calots, garden lizard, crocodile is crocodile, alligator is alligator, hemidactylus is a wall lizard, poisonous snakes, naja, cobra, Vangaris is crate, vipera is viper, chameleon, crocodilus, chilon, and naja. Aves, feathers, forelimbs modified to wings, hind limbs have scales, beaks are also there, ossified endoskeleton and pneumatic bones, four-chambered heart and homeotherms means they have equal body temperature as per the surroundings. Air sac to supplement respiration, calcareous eggs, amniotes, oil glands at the tail, crops and gizzards for crushing the food. Corvus is crow, columba is pigeon, Psittacula is parrot, Struthio is ostrich, Pavo is peacock, Actinodites penguin. अच्छा penguin कैसे याद रखोगे? अब तीनों डाइट पर हैं. तीन penguin डाइट लेंगे एक साथ. So Newfron, vulture, new adventure ऐसे. So Newfron, Struthio, Psittacula, Pavo. सिटाकुला पैरेट है सीता को पैरेट पसंद थे ऐसे याद रख सकते हैं. मैमेलिया डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स हेट्रोडोंट टीथ हेयर एक्सटर्नल पिना मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड्स मॉडिफाइड टू पेयर ऑफ लिम्स फॉर डिफरेंट लोकोमोशंस एडेप्टिव रेडिएशन शो करता है स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट विविपेरस. एग्जांपल ओविपेरस ऑर्निथोराइंकस प्लैटिपस
Viviparous, Macropus, kangaroo, pteropus, flying fox, camelus, camel, macaca, monkey, ratus, rat, canis, dog, felis, cat, elephas, elephant, iccus, horse, icca, horse है. Delphinus, common dolphin. Balanoptera, blue whale, blue belino, Panthera tigris, tiger, Panthera leo, lion. So these are the ones. ठीक है? The big size macro मतलब kangaroo, big size. बलिनो ब्लू कार. बैट उड़ रहा है, टेरेस पे चला गया तो टेरोपस उड़ता हुआ, ऐसे करके याद रख सकते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर हेयर. ऑल द फर्स्ट यूनिट of fast track revision has been done. एंड अब हम हर दिन मतलब 10 दिन और 10 यूनिट्स के बारे में बात करेंगे. सो डेफिनेटली रिमेंबर, आप रिवाइज करिए एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर जीटीज विद अस. ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम बायोइज. बाय एवरीवन.